Hi guys, welcome to my channel. I hope everyone's doing great. Well, today's video is going to be a super quick video because I'm going to be telling you guys how you can style your own hair and how you can simply straighten your hair. बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत टेक्निक यूज़ करते हैं बालों को स्ट्रेट करने का और अपने बालों को खुद से स्टाइल करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं जल्दी से आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपने बालों को स्टाइल करना है ईजी वे में, बहुत सिंपल मेथड में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो मैंने अपने बालों को अभी फ्रेशली वॉश किया था, एक्चुअली कल किया था। तो मेरे बाल क्लीन है। अगर आपके बाल क्लीन नहीं है तो आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हो, इवनली अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके बाल क्लीन है सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 1। और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको चाहिए नहीं, बहुत कम चीज़ चाहिए। फर्स्ट यू नीड अ comb, second you need is a heat protection mist, and because I'm straightening so I am using this flat iron perfector जो मेरे बालों को हीट प्रोटेक्ट भी करेगा और अच्छे से जो मैं स्टाइल करूँगी उसको रहने भी देगा। एंड देन यू नीड अ क्लिप टू टाई योर हेयर। अगर ऐसा नहीं है आपके पास तो आप इस तरीके का जो क्लिप होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन अ फ्लैट आयरन, और क्योंकि आज मैं अपने बाल स्ट्रेट करने वाली हूँ तो इसलिए आप कोई भी फ्लैट आयरन यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है अपने बालों को सेक्शन करने का। तो मैं मिडल पार्टीशन कर रही हूँ और उसके बाद अपने क्राउन एरिया से मैं अपने बालों को कुछ इस तरीके से लिफ्ट कर रही हूँ। आप देखो तो क्राउन एरिया मतलब मेरे कान के पास वाले सारे बालों को पीछे तक लेके जाके मैं लिफ्ट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। एंड देन हम इनको टाई करेंगे। आप चाहो तो रबर बैंड यूज़ कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस क्लिप। अब यहाँ पे मैंने बालों को सेक्शन करके टाई कर लिया है। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोना बी डूइंग इज़ वेरी सिंपल स्टेप। ये रहे मेरे बाल। अब इधर के जो बाल हैं आप चाहो तो इनको भी टाई कर सकते हो, बट आई एम गोना टेक देम ऑल द वे दिस साइड। उधर वाले बालों को भी आई एम गोना टेक ऑल द वे दैट साइड। एंड देन अगेन थोड़े से बाल और हम अपने ईयर के पास से उठा के हम उनको भी रोल करेंगे। And I'm going to just use this clip to tie these hair. अब क्या हो गया है, हमारे बाल अच्छे से सेक्शन हो गए हैं। अगर आप देखो तो सेक्शन अच्छे से हो गया है। अब हमारे पास खाली इतना पोर्शन बचता है स्ट्रेट करने के लिए। तो इसको मैं 2 में डिवाइड करूँगी, लाइक 2 सेक्शंस में somehow। एंड देन मेरे पास 2 क्लीन सेक्शंस हो गए हैं, मैं इनको स्ट्रेट करना शुरू कर सकती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोना बी डूइंग इज़ यूजिंग अ हीट प्रोटेक्टर मिस्ट। एंड आई एम गोना कोम, ताकि जो प्रोटेक्शन मिस्ट था वो इवनली मेरे सारे हेयर में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। एंड देन आई एम जस्ट गोना टेक फ्यू सेक्शन एंड अपनी स्ट्रेटनर से आई विल स्टार्ट कर्लिंग इट। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ यहीं कर करते हैं। गाइस यू हैव टू स्टार्ट कर्लिंग रूट के पास से, ताकि वो ऊपर से आपके बाल अजीब ना लगे। एंड देन आई एम गोना टेक इट ऑल द वे टू द डाउन। And then same thing I'm gonna do, just start from near the root and then take them all the way to the hair end. If you want you can wear gloves because usually this is hot. Now if you guys can see, this portion is done. This still looks untidy and little frizzy, but ये वाला हमारा portion हो गया। तो I'm gonna comb it again and this side is done. Now let's move on to the other side. And again I'm going to start like straightening. You guys can see this is neatly done. I'm just going to comb them so that they look nice. Now these are done. I'm going to keep them at the back and I'm just going to show you how they look from back. So this is how they look after straightening. Now I'm going to move on to this top area and अब इनको भी हम divide करेंगे 2 sections में. So these are the hair. I'm going to divide them again into 2 sections, bring them in the front. Again, I'll just comb a little bit. Use a heat protection mist. Comb again. And then I will start straightening my hair. You guys can see even this portion is done. I'm gonna just put it back and then we'll focus on this one now. Again, use a heat protection mist, comb. It's the same step, you know, heat protection, comb, repeat.
just do the same thing. So I'm gonna actually divide this into 2 portions. So पहले मैं पीछे वाला करूँगी, and then I'm gonna do the front. And there you go, even this is done. So I'm just gonna put them at the back, and now it's time to open this bun. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, again हम इसको 2 sections में divide कर रहे हैं, if you guys can see. And I'm just gonna keep the one section in front, and then the other one I'm just gonna tie it again, क्योंकि हम उसको बाद में straight करेंगे. And then use your clip to secure it for a few seconds, and then I'm just gonna comb this section. Use a heat protection mist. Again, repeat, and I will now divide these hair into more smaller sections, and I'm gonna pin the remaining hair again up, and we'll start straightening the leftover hair. Alright, this is done. I'm just gonna put it at the back, and then the remaining hair, again I'm gonna divide them into few other section, pin the remaining hair, and then again since we already used the heat protection, तो हम दोबारा नहीं करेंगे, बस we'll start directly jump into straightening. And this is also done. Put it at the back. Now this one. And this side is done. If you guys can see, it looks smooth. It's nice finish, if you guys can see. Now let's move on to the other side. I'm इसको अब जल्दी से करती हूँ, so you guys can see the quick steps, and I'm not gonna say anything, so you just can watch. Okay, now this is done. Now one thing which is very important, now either you can do sideways, like you can do a partition like this, or if you want to do the partition like this, whatever, just do it like whatever your preference is. So I think I'm gonna do probably middle partition. Just comb them nicely. I'm gonna take few hair आगे से, and then I'm just gonna straighten them थोड़ा round. अगर आप देखो तो मैं इस तरीके से इसको कर रही हूँ, and then bring them up. This will give me like a curtain kind of an effect आगे से, if you guys can see. Now this is how my hair looked from front. Now let me show you how my hair looked from back. So there you go guys, like it's a very quick, smooth finish, flat iron hair, and this is how I just style my hair. I don't use any hairspray after this क्योंकि इस तरीके से मेरे जो बाल हैं वो entire day ऐसे stay करते हैं. Alright, so this was the very quick, I think 5 minutes video to how to style your hair. I hope this video was helpful. और जो भी products मैंने use किए हैं, even the flat iron, उसका सब कुछ description में mention है, brand name and everything. And let's go ahead and end this video right here. I will meet you guys super soon एक नए video के साथ. तब तक के लिए take care, stay safe and style your hair nicely. Bye.